Hello guys, this is Palak Sharma and I take lessons in English at an academy, as you all know. So today is going to be my first live session, and today we're going to discuss something really very important yet ignored in the study of languages, and that the title speaks for itself is the word dilemma. What is actually a dilemma? It's kind of confusion. जब हम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा confuse हो जाते हैं तो we are in actually a dilemma kind of situation. तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं which confuse us a lot. हम confuse जाते हैं कि दोनों में से कौन सा word use करें. So we're going to do this thing now, and this is going to happen. So we're going to start without any delays. So the first pair of words which we're going to discuss is which or that. Now, usually which or that, they can be both used as in a sentence structure, so it is fine to use them. But the only time they actually create a confusion is when they are used as a relative pronoun. ठीक है, so finally we are starting a relative pronoun, and what happens is which and that इन्हें use करते हैं to introduce a clause. So which is used when you are introducing a non-essential clause, a clause which is not a very important part of the sentence. For example, if I say a sentence, the places which I visited were beautiful. Now, okay, I'll just try speaking it loud. Okay. So the places which I visited were beautiful. Here the clause is essential. It has been added for further information. Actually, a relative pronoun is a one which is used to show something is happening somewhere, a relativity. So what happens is which को use करते हैं in a case of non-essential clause, जब clause ज़रूरी नहीं है. So what happens is the place which I visited were beautiful. Now, which I visited, it's not important to put it in the sentence. ये सिर्फ additional information के लिए add किया हुआ है. So it's not important to add them. So what happens in this case is कि हमने suppose बोला एक sentence, the places which I visited were beautiful. So in this case what is happening is जो जगह मैंने देखी they were beautiful. तो ये important नहीं है कि हम ये चीज़ बोलें. So it is fine. Which or that दोनों नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होते हैं. इट्स नॉट यूज फॉर लिविंग थिंग्स एट ऑल. तो इसलिए ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होगा. नाउ विच को यूज करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ फर्दर इंफॉर्मेशन. सेकेंड होता है दैट. नाउ दैट इज यूज्ड जब हमें कोई एसेंशियल क्लॉज इंट्रोड्यूस करना होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द प्लेसेस दैट आई टोल्ड यू अबाउट वर ब्यूटिफुल. तो द प्लेसेस दैट आई टोल्ड यू अबाउट, ये जरूरी है कि आई मेंशन, ये एसेंशियल क्लॉज है. तो it tells us what we are talking about. तो इसलिए in this case it is important that we are visiting a very particular thing. It's essential to use this clause, तो हम that use करेंगे. तो just which is used when the next verb. So if I'm saying affect or effect, तो affect is a verb. affect verb है. effect जो है it is used as a नाउन. ओके, तो अफेक्ट जब हम बोलेंगे तो अफेक्ट के टाइम पे हम वर्ब के लिए यूज करेंगे, एंड अफेक्ट का मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस समथिंग. तो जब हम इन्फ्लुएंस करने के लिए बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द मेडिसिन डिड नॉट अफेक्ट हिम मच, तो इस केस में क्या होगा कि अफेक्ट नहीं कर रही है मेडिसिन, इट इज अ वर्ब. तो इसमें हम ए वाला यूज करेंगे, द मेडिसिन डिड नॉट अफेक्ट हिम मच. सेकेंड केस जब होगा जब हम लोग को क्या मिलेगा, जब हमें नाउन मिलेगा. नाउन होगा ई, इफेक्ट. तो इफेक्ट के केस में हम क्या बोलेंगे, दी ओनली टाइम. इफेक्ट के लिए हम बोलेंगे द सेंटेंस गोज लाइक दिस, द मेडिसिन हैड अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स. तो इफेक्ट इस केस में हम लोग का नाउन की तरह काम करेगा. बट देयर कम्स अ केस जब इफेक्ट को भी हम वर्ब के जैसे यूज करते हैं, तो उस केस में इफेक्ट का मतलब हो जाता है कि टू ब्रिंग अबाउट समथिंग. तो टू ब्रिंग अबाउट के लिए हम बोलेंगे इफेक्ट बिकम्स a verb. एक टाइम पे effect becomes a verb, and that point, okay, I'm trying to speak louder. The only time effect becomes a verb is at time when the meaning becomes to bring about. For example, मैंने बोला the principal has put into effect some new rules, या the principal effected new rules. तो इस केस में effected क्या बन जाएगा, verb, और उसका मतलब हो जाएगा to bring about something. Then we have another pair of sentence, pair of word which goes into together और in space to. अब इन दोनों को भी बहुत कंफ्यूज करते हैं. वी कंफ्यूज देम अ लॉट, बट डू नॉट कंफ्यूज इनटू एंड इन स्पेस टू. व्हाई? बिकॉज इनटू एक preposition है. इनटू इज अ preposition. सो आउट, इसका मतलब क्या होता है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. इनटू का मतलब सिंपल होता है, समथिंग फ्रॉम आउटसाइड कमिंग टू इनसाइड. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक्ड इनटू द क्लासरूम. इनटू का क्या यूज हुआ इसमें, इनटू हैज बीन यूज्ड एज a preposition. कोई चीज बाहर से अंदर आ रही है, something is coming from outside to inside, तो into becomes a preposition. लेकिन जब we have in space to,
उस टाइम पे समथिंग विल बी डिफरेंट. इन स्पेस टू में क्या होगा? In will become an adverb. Okay, it will be an adverb and then it will be followed by a preposition which will be to. Okay, so the sentence will go like, he walked in to tell the class about the program. तो इसमें क्या हुआ कि in to अलग अलग हो गया. He walked in space to the class to tell the class about the program. तो इसमें in जो है it was an adverb and to जो हो गया वो आपका preposition बन गया. So this was the difference between into and in space to. The next pair of words which we have is farther and further. Father में क्या होता है कि father means we usually confuse them. हम usually confuse हो जाते हैं father and further में. लेकिन what happens is कि father refers to physical advancement. जब physically हम distance cover कर रहे हो तो then comes father. दो फादर का भी ऐसा ही होता है कि फादर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वर्ड जो फार की कंपेरेटिव डिग्री है. लेकिन स्टिल व्हाट हैपेंस इन दिस केस इज जब डिस्टेंस की बात कर रहे होंगे तो फादर बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से हिज हाउस इज फार्दर देन माइन, तो उसका घर मुझसे दूर है. ओके, तो इसका घर मुझसे दूर है इसलिए हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअल डिस्टेंस. बट देन व्हाट अगेन हैपेंस इज कि फर्दर भी फार की ही कंपेरेटिव डिग्री है. लेकिन इन दैट केस हम कभी भी डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं. फर्दर में हम डिग्री की बात कर रहे हैं, एक्सटेंट की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस सेंटेंस कि ही डिसाइडेड टू गो अहेड विदाउट एनी फर्दर डिले. ओके, तो विदाउट एनी फर्दर डिले मतलब फर्दर यानी कि अगेन हम ये बोल रहे हैं कि डिले नहीं होनी चाहिए और किसी डिग्री में. देयर शुडंट बी मोर डिले इन एनी डिग्री टू एनी एक्सटेंट. तो farther and further they both stand for comparative degree of far, but still there is a difference in their meaning. Their meaning is very much different, and their meaning farther, in case of farther it is a physical distance, and in case of further it becomes a kind of okay, I'll try increasing the volume. Yeah, I've increased it. And in case of further, what happens is कि further में it kind of becomes a degree or extent का comparison. So that is the difference between farther and further. अब there's again another pair of words जो बहुत confuse करता है, and that is bring or take. For example, अब इन दोनों को हम बहुत confuse करते हैं. We confuse them a lot. And actually what happens is that they both depend upon the direction of the action. Okay, so for example if I say, okay, I'm smiling, I will bring her with me to the party. Okay, if I've said I will bring her with me to the party, तो इसका मतलब my action is towards the party. I'm coming towards the party. I'm bringing her. Okay, bringing means coming towards. Okay, so we have got this thing कि जब भी हम किसी चीज की तरफ जा रहे होते हैं, we are coming towards something, then it becomes bringing. Okay, then the next case which we have take. ठीक है, तो टेक में क्या होगा? शी प्लान्स टू टेक जस्ट वन सूटकेस विद हर टू लंडन. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि दिस थिंग इज गोइंग अवे. द एक्शन इज अवे फ्रॉम वेयर यू आर. हेंस वी हैव यूज्ड द वर्ड टेक. ओके, या आई एम स्माइलिंग, प्लीज डोंट वरी. तो द थिंग विच वी हैव गॉट नाउ इज share stock and equity is not my part actually, that's for economics, and that's what I'm telling you कि bring और take में direction का फर्क है. ठीक है, ब्रिंग में क्या होगा? यू आर टेकिंग समथिंग टूवर्ड्स, और टेक में यू आर टेकिंग अवे फ्रॉम समथिंग. द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव गॉट इज ओरल वर्सेस वर्बल. ओके, ओरल और वर्बल में क्या प्रॉब्लम होगी कि ओरल एंड वर्बल दे डू नॉट मीन द सेम थिंग. ओरल और वर्बल को हम यूजुअली कनेक्ट करते हैं कि दे आर सेम, बट दे आर नॉट सेम. ओके, ओरल एंड वर्बल डिफरेंट है. व्हाई? ओरल रेफर्स टू द वर्ड स्पोकन और बाय माउथ. जो हम चीज बोल रहे हैं दैट इज ओरल. आई एम स्पीकिंग समथिंग दैट इज ओरल. ओके, एंड व्हाट हैपेंस देन इज वर्बल मीन्स वर्ड्स के थ्रू, समथिंग स्पोकन थ्रू वर्ड्स, इन वर्ड्स. ठीक है, एनीथिंग एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स. वो रिटन भी हो सकता है, वो स्पोकन भी हो सकता है, बट एज लॉन्ग एज इट इज इन वर्ड्स इट बिकम्स verbal. Okay, for example verbal communication में it means communication through words, and then we have verbal agreement, यानी कि agreement जो हुआ है that is also happen through words. लेकिन oral में what happens is, oral में हम बोल रहे हैं हम mouth का use कर रहे हैं, it has nothing to do with words. The next word which confuses us is disinterested and uninterested. Now do not confuse disinterested and okay, I'll repeat once again. Oral and verbal. Oral मतलब you've spoken something from your mouth, and verbal means something is in words. Now something which is in words can also be written,
It can also be spoken. So Anshuman, I guess you understood now कि जब भी कोई चीज it is being spoken, तो it is always oral, and whenever you are saying something is verbal, तो वो चीज written भी हो सकती है, वो चीज बोलने में भी हो सकती है, ठीक है. Verbal simply means words से हो रहा है, ठीक है. Then disinterested and uninterested, coming back to it, so do not confuse disinterested or uninterested, because disinterested means impartial, unbiased, okay. And what happens in this case is, suppose I say a disinterested mediator solved the dispute, okay. तो a disinterested mediator solved the dispute, यानी कि मतलब ये हुआ कि disinterested था वो mediator, he was not interested, okay. तो नहीं interested था means he was unbiased था, okay, he was unbiased, he did not take any side, fine. So what happens, yeah, oral communication is a part of verbal communication, right, it's right. So uninterested का disinterested का मतलब now we know कि जो unbiased है, who is not concerned with anything, और uninterested का मतलब होता है जो interested ही नहीं है, उसे कोई interest ही नहीं है, he is not interested, he is indifferent, okay, he has no interest. For example, if I say कि the student is uninterested in chemistry, unbiased means who doesn't take any side, okay. Then if I say कि the student is uninterested in chemistry, तो इसका मतलब ये हुआ he is uninterested, that means the student has no interest in chemistry, okay, he is not interested in studying chemistry, तो he is uninterested. लेकिन disinterested इंसान तब होगा जब he is not willing to take any side, जब वो कोई side नहीं ले रहा होगा, he is disinterested, okay. The next couple of words which you've got is its with an apostrophe and its, that its is without an apostrophe. Now in the case of an its with an apostrophe, क्या होता है कि actually वो it और is को मिलाकर बनता है, तो we have put that apostrophe in that case, ठीक है. उस apostrophe का मतलब ये है कि हमने it और इसको short कर दिया है, okay. अब क्या होगा, मैंने बोला sentence it's a wonderful day, तो it's a wonderful day में it और इसको separate करके we have made this sentence, okay. तो यहाँ पे हमें पता है कि apostrophe वाला यूज करना है. जो बिना apostrophe वाला होता है, it is a possessive noun, right, it's a possessive one. तो what happens in that case is, मैं बोलूंगी suppose sentence the dog wriggled its tail. Now the tail belong to the dog, तो वो उसे wriggle कर रहा है वो उसकी टेल को, ठीक है, दैट इज हिज टेल, इट्स टेल, ओके. तो इट्स का ITS बिना अपोस्ट्रोफी का होगा. इफ यू वांट टू चेक कि किस जगह ऐसा हो कि इट्स लगे या इट्स इज लगे, या इट्स अपोस्ट्रोफी वाला इज इक्वल टू इट इज, फाइन, दिस इज करेक्ट. तो लेकिन जब आपको टेस्ट करना है कि क्या लगाना चाहिए, अपोस्ट्रोफी वाला बिना अपोस्ट्रोफी वाला, यू हैव टू डू जस्ट वन सिंगल थिंग. आपको एक चीज करनी है कि सबसे पहले आप उस सेंटेंस में इट इज लिख कर देखो, इफ इट इज वर्किंग गुड देन इट्स फाइन, लेकिन इफ इट्स नॉट वर्किंग गुड तो बिना अपोस्ट्रोफी वाला ही लगाइए. haughty means someone who is arrogant, okay. I hope it helps. Then the last word which we want to deal with is lose with double O and lose with a single O. तो lose with double O में what happens is कि lose उसका मतलब होता है something which doesn't like fits you, okay, something which is not fitting you, तो वो lose होगी double O वाली. When there is a single O, तो what happens is that LOSE, it means that you are losing something, you have lost something, okay. So this is the case कि पहले वाले केस में double O वाले केस में you've got a sentence like she wore a loose evening gown, yeah, unfit, loose is unfit, right. And in case of LOSE, what happens is कि वो lose का मतलब है you've lost something, okay. So in this case you are and your, that your is for your and you are is written as you apostrophe RE. So this is it, yeah, loss, that is lost, yeah, right, this is correct one. LOSE, lose wala, it means to lose something, you've lost something, fine. That is, yeah, that is the loss, Noor, that's correct one. So if you can ask like you can ask something, that is LOOSE, okay. Loss is, lose is to defeat, yeah, it's right, okay. And the thing which I got is advise and advice, yeah, that is again kind of very difficult thing. Advise S wala, it means it's a verb. जहाँ पर भी S वाली चीज आती है, it means it's a verb. Like practice के साथ होता है, we've got practice, तो practice में S लगता है तो it becomes a verb. लेकिन C वाला होता है शुभम, then it is actually a noun. तो if somebody gave you some advice, तो वो वाला C लगेगा, it will be a noun. या if you are going for a practice, तो वहाँ C लगेगा, it will be a noun. लेकिन अगर S वाला लगाना चाहते हो, if you are putting the S1, तो वो verb होगा, it will become a verb. तो verb कैसे sound करेगा, like verb कैसा होगा उस sentence में, she is practicing, तो S हो जाएगा, या she is advising, तो S हो जाएगा. So it will happen like this. So this is it. I think this is pretty much sums up everything. Like I can just put on some doubts. Yeah, lose and lose we've already done.
Okay. Yeah, so everything is on. Haughty, I told you about haughty means that someone who's arrogant. Okay. Yours and yours. Okay. Then we have it's, yeah, it's right. It's is okay. Dislike and unlike means, dislike means you do not like something, and unlike means something which is different from some other thing. तो अगर कोई चीज different है, then you can say it's unlike, and अगर कोई चीज same है तो it's like they are likeable. वो like करते हैं दोनों एक चीज, they are likeable things. And dislike में you are not liking something, you dislike eating anything, bitter gourd or anything. You dislike eating something, you dislike eating pizzas. And unlike कैसे use कर सकते हैं sentence में, you can say she's so unlike me, like she's not she's different from me, she's not like me, so she's unlike me. That's it. Okay, so these are all pretty much some things. So that's it, and thank you for your response. And that's it, we'll come with another live session probably on these kind of things. If you want, then you can just let me know if you need all these kind of things, and follow me on an academy and you'll get more of such things. So that's it, thank you.